For a diatomic gas, if gamma 1 equals to Cp by Cv for rigid molecules and gamma 2 equals to Cp by Cv for another diatomic molecules but also having vibrational mode, then which of the following option is correct? See, gamma is given by 1 plus 2 by F. Now first molecule is a diatomic molecule having translational and rotational degree of freedom. So the total degree of freedom, it has 3 translational plus 2 rotational, so total 5 degree of freedom. So gamma 1 will be equals to 1 plus 2 by 5. Okay, I am using this equation. So now here it will become 5 into 1 plus 2, that is 7 by 5, and gamma 2 has a vibrational mode. So for that molecule the degree of freedom 3 translational plus 2 rotational plus 2 vibrational, so total 7 degree of freedom. So gamma 2 equals to 1 plus 2 by 7. So this will become 7 into 1 plus 2, that is 9 by 7. So 7 by 5 will become 1.4 and 9 by 7 will become 1.28. So here gamma 1 is greater than gamma 2. So which option is correct here? Gamma 1 is greater than gamma 2, or gamma 2 is less than gamma 1. So option number 4 is correct. A rectangular metallic loop is moving out of a uniform magnetic field region to a field-free region with a constant speed. When the loop is partially inside the magnetic field, the plot of magnitude of induced EMF with the time is given by. See, in the first picture what is given, here we have this kind of rectangular loop, और ये जो rectangular loop है, it is moving out of this magnetic field. This in the background you can see this part is the magnetic field. So let us assume at an instant of time, this is the position of the rectangular loop, right? Then how the EMF changes with the time, that we have to tell. See here, if I just talk about this part of the loop, right, this part, तो ये जो part है इतना area per second लेट से बाहर आएगा, तो ये जो loop है वो constant velocity से आगे बढ़ रहा है, right? तो every time a small amount of area is going out, right? So that is dA by dt is constant, dA by dt is constant, right? So we know that from electromagnetic induction or from Faraday's law, E is equals to d phi by dt. Now flux is equals to Ba cos theta, right? Here the magnetic field is constant, right? So what we can write, EMF is equals to B is constant, d by dt of area, right? Now area is L into x. What is L? Let us assume this vertical length of this rectangular loop is L, right? And this portion, right, this any of the portion has length x. So let us assume per second the x portion is moving out. So dA by dt can be written as L dx by dt, right? So here L dx by dt we can write. So L out and dx by dt is the velocity, right? Here the velocity is constant. So EMF, right, is also constant because B is constant, length is also constant, and velocity is also constant. So here the EMF induced in the loop will also constant. So option number 4 is the correct. A light source of wavelength lambda illuminates a metal surface and electrons are ejected with maximum kinetic energy 2 eV. So we know that, let us assume this is the metal surface on which a light is incident having wavelength lambda. Now from the Einstein's equation, the energy is equals to work function, right? A part will be used to take out the electron and remaining will be in the kinetic energy of the electron. So here E is equals to 5 plus K max. Now E can be written as hc by lambda plus work function is 5 and the maximum kinetic energy is 2 eV, which is given here. Now in the another part of the question, if the same surface is illuminated by a light source of wavelength lambda by 2, the maximum kinetic energy of the ejected electron will be, then what will be the kinetic energy of the ejected electron? The work function of the metal is 1 eV. Here the work function is given. So here hc by lambda is equals to 1 eV plus 2 eV, that is 3 eV. This is the incident energy, or can be written as E. Now in the second case, right, E dash will be equals to hc by lambda by 2. So here it is 2 hc by lambda. So the incident energy is 2E. So 2E, here E is 3 eV. So incident energy becomes 6 eV. Now to find the kinetic energy we use this equation again. So E dash is equals to work function plus K dash max. So K dash max is equals to E dash minus work function. So E dash is 6 eV and work function is 1 eV. So 6 minus 1, that is 5 eV. So the correct option is option number 3. A simple pendulum is taken to a planet of mass and radius 4 times and 2 times respectively than the Earth.
the time period of the pendulum remains same on Earth and the planet. So let us try to verify the first statement. So we know that T is equals to 2 pi under root L by G. Now here 2 pi and L are constant. So G is equals to Gm by Re square, that we know, right, for Earth. Now for the given planet, Gp is equals to G. Now here it is given that the mass becomes 4 times. Right, so mass becomes 4 times, so it is 4 me, right? And what about the radius? What about the radius? The radius of that planet is 2 times, so here it is 2 re square. So this will become 4 gme upon 4 re square. So 4 and 4 will get cancelled, so this will become equals to GE. That is that G is same, right, for Earth and the given planet. So we can say that the time period will also remain same. So the first statement is correct. Now let us try to verify the second. The mass of the pendulum remains unchanged at the Earth and the other planet. See, we know that the mass of the pendulum will not change because mass is independent of the gravity. Okay, so mass will not change and mass doesn't depend on the place. Okay, so statement 2 is also correct, that is the reason is also correct, but reason is not the correct explanation. So answer is A. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. The torque due to force 2I plus J plus 2K about the origin acting on a particle whose position vector is I plus J plus K would be. Now we know that torque is equals to R cross F, right, where R is the position vector with respect to the origin, which is given here. So what we will do here, we will just do the cross product. So I cap plus J cap plus K cap cross 2I cap plus J cap plus 2K cap. Now on doing the cross product here, I cross I, it will become 0. Now I cross J, so this will become K cap. I am directly writing the answer. Then minus 2 J cap, then minus 2 K cap plus 2 I cap plus 2 J cap minus I cap. So this is the answer if you do the cross product of these vectors. So now here I cap minus 2 I cap, so this will become minus, sorry, K cap minus 2 K cap, so this will become minus K cap, then minus 2J plus 2J, so J vector will become 0, right? And then what about the I? Here we have plus 2I minus I, so this will become plus I. So I cap minus K cap is the final answer. So here option number 3. A force F equals to 2I plus Bj plus K cap is applied on a particle and it undergoes a displacement I cap minus 2J minus K cap. What will be the value of B if the work done on the particle is 0? तो हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट और वर्क के बीच में क्या रिलेशन है. तो वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ हियर द वर्क डन गिवन इज 0, तो वर्क डन इक्वल्स टू 0 कर दिया. अभी जो F है और B है, D है डिस्प्लेसमेंट, उसका डॉट प्रोडक्ट लेके इक्वल्स टू 0 करना है. तो 2I कैप प्लस BJ कैप प्लस K कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ I कैप माइनस 2J माइनस K कैप. नाउ हमें पता है कि I डॉट I1 और I डॉट J 0 हो जाएगा. तो 2I into I is 2 because I dot I is 1 plus Bj into minus 2J is minus 2B. So I can write here as 2 minus 2B, then minus, because K dot K is 1, right, and that is equals to 0. So here 2 minus 1 is 1, right. So here I can write 1 minus 2B, so 1 equals to 2B, or we can write B equals to 1 by 2. So the correct option is option 2. A ball of mass 100 gram is projected with velocity 20 meter per second at an angle 60 with the horizontal. The decrease in the kinetic energy of the ball during the motion from a point of projection to the highest point. So we know that when the object is fired from this point, right, its velocity has two components. One is u cos theta and another is u sin theta. So u cos theta, the initial velocity is given 20, so 20 cos 60 is 10 meter per second, right. Now this is the kinetic energy in the, or we can say this is the velocity in the horizontal direction. Okay, now the initial velocity of the object is u, the net velocity is u. So the initial kinetic energy is half m u square. Now when the object reach at the highest point, right, its kinetic energy, that is K final, will become half m v square,
right? And what is asked to find? It is asked to find what is the decrease in the kinetic energy. That is, we have to find the change in the kinetic energy, that is delta K, that is K initial minus K final, because initial kinetic energy is higher. Now, what is the initial kinetic energy? It is half into m into u. Initial net velocity is 20 meter per second, which is given. So it is 20 square, right? So this will become half m into 400. And what about the final kinetic energy? That is half m v square. So that is half m, and the final velocity, that is at the highest point, it is 10 meter per second. So this will become 100. So now K initial minus K final is half into m. Now half into m is common in both the term. So this will become 400 minus 100. So this become half into m. What is mass? Mass is given 100 gram, that is 0.1. 400 minus 100 is 300. So if you solve this, this will become 2 into 150. So here 150 into 0.1. So this will become 15 joule. That is, the change in the kinetic energy is 15 joule, or we can say the kinetic energy decreases by 15 joule. Assertion: in Young's double slit experiment, the fringe produced by a red light are closer as compared to those produced by a blue light. So let us try to verify this statement number 1. See, the fringe width is given by equation lambda d by d. That is, the beta fringe width is proportional to lambda. That is, the fringe width of red light will be greater than the fringe width of the blue light. Why? Because the wavelength of red is greater than wavelength of blue, because B, that is the fringe width, is directly proportional to lambda. Now here what is given in the statement? It is given that the fringes produced by red light are closer. It means the statement 1 is wrong. So now let us try to verify the second statement. The fringe width is directly proportional to the wavelength of the light. Yes, so second statement is correct. So here option 2 is correct, that is A is false and R is true. A transparent film of refractive index 2 is coated on a glass slab of refractive index 1.5. So here I have shown, right, this is the transparent film which is coated on this glass. What is the minimum thickness of the transparent film to be coated for the maximum transmission of green light of wavelength 550 nanometer? See, here we have to pass the light such that the maximum green light passes. If you allow white light to pass, right, let's say a white light is incident, then the maximum transmission should happen for the green light having wavelength 550 nanometer. And we have to assume that the light is incident nearly perpendicular to the glass surface. It means light is not incident exactly perpendicular but very near perpendicular. Okay, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी तो ये एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, so it will bend towards the normal. Now here at the interface what will happen, right? An internal reflection will take place. A part of the light will reflect back, right, and a part of light will transmit. Now remember, this refractive index of glass is given just to make you confuse. आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है. अगर ये नहीं भी दिया होता तो यहाँ एयर होती और जो लाइट है वो डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती. यहाँ से जो है वो पार्शियल रिफ्लेक्शन करके लाइट फिर जाएगी और वो फिर से यहाँ रिफ्रैक्ट करेगी. तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट बैक होएगी और एक लाइट जो है यहाँ से, इन जनरल कैसा होता है कि एक फर्स्ट रे है, जैसे यहाँ टच करेगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकता है या तो वो 100% ट्रांसमिट हो सकता है. बट हमें पता है अ पार्ट ऑफ लाइट, राइट, विल रिफ्लेक्ट एंड अ पार्ट ऑफ लाइट विल रिफ्रैक्ट. अभी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा और मीडियम पर डिपेंड करेगा कि कितनी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी और कितनी जो लाइट है वो ट्रांसमिट होगी, राइट. सो लेट अस एज्यूम इफ द सम लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक, right, and a part is getting into the medium, then that light will again reflect back, then from here it will refract. and क्या होगा, इन दोनों के बीच जो है वो आगे जाके इंटरफियरेंस होगा. जब भी इंटरफियरेंस होगा तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन सकती है या फिर कलरफुल फ्रिंजेस जो है बन सकती है. बट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन होना चाहिए. अगर मैक्सिमम ट्रांसमिशन होना चाहिए तो जो रिफ्लेक्शन है वो ज़ीरो होना चाहिए. अगर रिफ्लेक्शन ज़ीरो हुआ उसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़ीरो है. अगर ज़ीरो है उसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हुआ है. अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होना है तो जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 के मल्टीपल में होना चाहिए, राइट. तो जो मिनिमम है या λ/2 रहेगा, नेक्स्ट जो है वो 3 λ/2 रहेगा. तो मिनिमम है वो λ/2 होना चाहिए. तो फॉर थिन फिल्म इंटरफियरेंस, अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा है तो थिन फिल्म इंटरफियरेंस द पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज गिवन बाय
mu into t, that is delta x equals to mu into t, where mu is the refractive index of the film and t is the thickness of the film. So mu t इक्वल्स टू डेल्टा एक्स है, और जो डेल्टा एक्स है वो हमने लेमड़ा बाई 2 बताया है, तो वी कैन इक्वेट दिस म्यू टी इक्वल्स टू लेमड़ा बाई 2, और हमें क्या चाहिए थिकनेस, तो थिकनेस को सब्जेक्ट करो, सो लेमड़ा बाई 2 म्यू, लेमड़ा क्या दिया है हमें 550 नैनोमीटर, सो 550 डिवाइड बाई 2 इंटू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म दैट इज 2, सो 550 by 4 it is 137.5 nanometer. A tube of length L is shown in figure. The radius of cross section of point A is 2 cm. So यहाँ जो है point 1 उसका जो radius है वो 2 cm है, and at the point 2 is 1 cm. So here the radius is 1 cm. Now if the velocity of the water entering at point 1 is 2 meter per second, so यहाँ से 2 meter per second से water enter होता है, then the velocity of water leaving the point 2 will be, तो यहाँ से कैसे कितना पानी जो है per second बाहर आएगा. So it is very easy, we can use equation of continuity, that is A1 V1 equals to A2 V2. Now area of the first is pi R1 square into V1 is equals to pi R2 square into V2. So pi and pi will get cancelled, right? So V2 will be equals to R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू V1. नाउ R1 जो है वो हमारा 2 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा. सो हियर इट इज़ 4 अपॉन R1, R2 जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, एंड V1 इज गिवन 2, सो दिस विल बिकम 8 मीटर पर सेकेंड, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. गिवन आर द स्टेटमेंट फॉर सर्टेन थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स. तो यहाँ हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है जिनमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स की बात हुई है, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सी इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी उसके मास या नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड नहीं करता है. जैसे सिस्टम का जो टेम्परेचर है, या कोई सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट है, या उसका प्रेशर है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है. फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी है, या वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, या बॉइलिंग पॉइंट है, या प्रेशर है, वो कितना पानी है उस पर डिपेंड नहीं करेगा. लेट्स से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो डेंसिटी है वाटर की, वो जो है वो वाटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है. तो ये जो है इनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ या इंटेंसिव वेरिएबल्स बोल सकते हैं. एक्सटेंसिव है जो डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन हाउ मच मैटर अ सैंपल कंटेन, या फिर साइज़ पर. ओके, सो जैसे मास है, अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट है तो मास जो है वो अमाउंट पर डिपेंड करेगा, राइट. वॉल्यूम जो है वो सिस्टम की साइज़ पर डिपेंड करेगा, या फिर इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी है वो मास पर भी डिपेंड करेगी सिस्टम की, राइट. सो ये एक्सटेंसिव वेरिएबल्स वो है जो सिस्टम के अमाउंट या मास पर डिपेंड करते हैं. तो अभी आइडेंटिफाई करिए इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट वन, दैट इज ए एंड बी आर ओनली, दैट इज इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड मास, राइट. ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब ये एक्सटेंसिव वेरिएबल्स है. प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ये डिपेंड नहीं करते हैं अमाउंट पर, इसका मतलब ये इंटेंसिव वेरिएबल्स है. तो ए एंड बी आर ओनली करेक्ट. An electron projected perpendicular to a uniform magnetic field B moves in a circle. If Bohr's quantization is applicable, then radius of the electronic orbit in the first excited state. See here, first excited state is given, that is n equals to 2. See, whenever the electron is thrown in a magnetic field, right, its velocity perpendicular, then in that case, what will happen? The electron will start moving in a radius which is given by equation mv by qb. और यहाँ दिया है कि Bohr's quantization is applicable. Now what is Bohr's quantization? We know that L is equals to nh by 2 pi. This is the Bohr's quantum condition. Okay, and this is L is the angular momentum. So L can be rewritten as mvr. Now what we can do is just make mv as a subject. So mv is equals to nh by 2 pi r. Now here we have to put n equals to 2, right, because it is given in the question. So here 2h by 2 pi r, so 2 and 2 will get cancelled, it is h by pi r. Put that value of mv in this equation. So r is equals to h upon pi r, and qb here we have, so here it is q into b. Now take this r here, so r square will be equals to h upon pi q b. So r is equals to, r will be equals to under root h by pi q b. So it is r will be equals to under root h upon pi. Q is the charge of electron, so it is E, and B. So option number here we have 4, which is the correct one. Which of the following is the correct dimensional formula for the capacitance in F? Okay, we have to find the dimensional formula of capacitance, that is unit is farad, right? We know this in terms of
we have to find dimensional formula in terms of mass, length, time and charge. Okay, mass, length, time and charge. See, for that we should know any of the equation of the capacitance. So the very famous equation and very basic equation, we know that C is equals to Q by V. Okay, now Q is a charge. Okay, so let us write C as it is because it's a charge. Okay, and V is W by Q. Voltage is work done per unit charge. And for capacitance, we have to write F because the unit is farad and that is given in the question. So now this again charge Q will go up, it will become C square, okay, by W. Now W is work done is Newton into meter, so we can rewrite this as C square Newton meter. Now again we can rewrite this as C square Newton is M1 L1 T minus 2 and meter is L1. Just rewrite this C square, then M will go up, so it is M minus 1, then L and L we have 2L, so it is L minus 2 and T 2. Now compare with the options. So only two options has C square, option 1 and option 4. Then we have M minus 1 and that M minus 1 is only in option number 4. So that one is the correct one. For a short dipole placed at origin O, the dipole moment P is along x-axis as shown in figure. So let us assume here we have a very short dipole. At this point we have a very short dipole like this. Okay, and if this is negative, if this is positive, then the dipole moment will be in the direction negative to positive. Now what is given here? If the electric potential and electric field at point A are V0 and E0. So where is point A? So point A is lying on the x-axis. Okay, point A is lying on the x-axis. So at this point, at distance r, it is given that the electric potential is V0 and electric field is E0. Now what is asked here? Then correct combination of the electric potential and electric field respectively at point B on y-axis. We have to find the electric field and electric potential at point B. See, for a dipole, we should know two equation, right? Very important equation. So if I have this electric dipole, then the electric potential is given by equation Kp cos theta by r square, right? Where K is a Coulomb's constant, P is a dipole moment and r, you know, that is the distance. Okay, so if and the theta is the angle between the dipole moment and the displacement vector of the point. So B point is lying here, exactly here. Okay, so the B point makes angle 90, the displacement vector of the B point and the dipole moment is in this direction, right? And the B point is in upward direction, so the angle becomes 90. So at B point the electric potential becomes 0. At point B the electric potential becomes 0. Why? Because Kp cos 90 by r square. So cos 90 becomes 0. So this becomes 0. Now what about the electric field? The electric field is given by equation on the axis, right? On the axis means here at point A. At point A, right, the electric field is given by equation 2Kp by r cube. You are knowing this. And on the equatorial point, right, means any point here, it is given by equation. It is given by equation, that is E on the equatorial line is given by equation Kp by r cube. But here the distance is given 2r. This distance of point B is given 2r. So here I am writing 2r cube. So how I can rewrite this point? E equatorial is equals to Kp divided by, here we have 2r cube. So 2 cube is 8 and r cube as it is, right? But in the question it is given that at point A the electric field is E0, right? The electric field is E0, which is given by equation 2Kp by r cube, that already I have written here. So this part is E0. So now what I am doing to make it more easier, I multiply this 2 and divide this by 2. So this part of the equation, 2Kp by r cube is nothing but E0. That is E0, 2Kp by r cube. So how I can rewrite this? It is 2Kp by r cube, that is E0, and this is 8 into 2, it is 16. So electric field is E0 by 16 and electric potential is 0. So 0 and E0 by 16. Correct answer is option 3.
A series LCR circuit is connected to an alternating source of EMF E. The current amplitude at resonance frequency is I0. If the value of resistance R becomes twice of its initial value, then amplitude of current at resonance will be. See, you should know one thing, that is at resonance, that is Z. Z is the impedance. Z is given by equation R square plus XL or XC minus XL whole square. Now remember, at resonance, this impedance part becomes 0. So Z will be equals to R. So here we have Z equals to R, and the current, the maximum current, is given by equation Vm by Z. So it is Vm by R. Now you are increasing the value of resistance. That is, now the resistance becomes 2R. What is here? The resistance becomes 2R. So Z will be equals to under root 2R square. And that will be again become 2R because this part will be 0. So again, the maximum current is given by equation Im dash is equals to Vm by 2R because Z becomes 2R. So now Vm by R, this is I0. This is given in the question that the amplitude of the current is I0. So Vm by R is I0. So my new current will be equals to I0 by 2. So the correct option is option 2. The maximum percentage error in the measurement of density of a wire is, see, we have to find the error in the density. तो हमें जो है density की formula पता होनी चाहिए. So density is equals to mass upon volume, right? Now here we have mass, radius and length, right? So we have to convert that volume into radius and length. So we can write volume is equals to area into length, or let us assume the wire is cylindrical. In that case, we can rewrite this as density is equals to mass upon pi r square into L. Now how we find the error? How we find the percentage error? So delta rho by rho is equals to, then here delta m by m plus, now here pi is a constant, so in the constant there is no error. Now here we have r square, so we can write here 2 delta r by r plus delta L by L because here we have L. Now delta, what is the meaning of the delta? Means this part of the equation. Okay, this part of the equation can be considered to be a delta, right? That is the least count. Okay, so here delta rho by rho is equals to delta m by m. So what is delta m? 0.003. And what is m? M is this part of the equation which is given here. It is 0.6 plus 2 into delta r. So here delta r is 0.01 centimeter. So 0.01 divided by 0.5 plus delta L. It is delta L is 0.05 and length of the wire is 10. Now if you solve this, then you will get delta rho by rho is equals to, now if you solve this part, you will get 0.05 plus, if you solve this part, you will get 0.04 plus, if you solve this part, you will get 0.005. Now if you add this, right, 0.005 plus 0.005, right, you will get 0.01, and here we have 0.04, so you will get 0.05. So this is the fractional error. Now if you multiply 100 on both sides, then you will get percentage error. So I multiply here 100, then the error will be 5%. A small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerine. The velocity of the ball becomes constant after some time. If the density of glycerine is half of the density of the ball, then the viscous force acting on the ball will be. See, whenever something falls, let us assume something falls, right, into a liquid, then what will happen when an object fall into the liquid, right? In that case, the buoyant force acts vertically upward, right? And also the viscous force acts vertically upward. So two forces acts vertically upward. One is the buoyant force and another is the viscous force. And one force acts downward, and that is mg. Now if the object move downward with constant velocity, it means, see, the velocity is constant. It means that the net force acting on the object is 0. It means that mg is balanced by buoyant force and the
viscous force. So how we can write the equation? We can write like this: mg is equals to viscous force plus buoyant force, because these two forces are balanced by right, by mg. Now we can rewrite this: mg is equals to F viscous plus, now buoyant force is given by rho Vg, right? That is the density of the liquid into volume of the object inside into G, right? But in the question it is given that the density of glycerine is half the density of the ball. Okay, so let us assume the density of the ball is rho, then the density of the glycerine will be rho by 2, right? And mg, right, mg, m is mass, so mass can be written as density into volume. This is the density of the ball and the volume of the ball, so I can write it as rho Vg is equals to Fv plus rho by 2 Vg. Now what we will do, we will make this as a subject, viscous force. So F viscous is equals to rho Vg minus rho by 2 Vg. Now if you solve this, right, you will get rho Vg by 2. But here rho V is the mass of the object. So mg is equals to rho Vg. Okay, density into volume into G, and that is equals to mg. So I can write here mg by 2, that is the viscous force acting is mg by 2, hence the correct answer is option 2. A symmetric thin biconvex lens is cut into 4 equal parts by two planes AB and CD as shown in figure. If the power of the original lens is 4D, then the power of the part of a divided lens is. See here, we are cutting the lens into 4 equal parts. First, let's say we cut horizontally and then we cut vertically. तो हमें ये पता है कि जब भी हम लेंस को ऐसे बीच में से वर्टिकली कट करते हैं तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो डबल हो जाती है, दैट वी नो. Okay, and we can prove this also by using the lens maker equation. 1 upon f equals to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. We can use this equation to prove this. Right, we can prove this by using that equation, but no need to prove right now. Right, so what will happen when you cut vertically? The focal length will get double, and when the focal length will get double, the power will be half, because we know that power is equals to 1 upon f. But when you cut it horizontally, like this, when you cut it horizontally, there is no change in the focal length. Remember this. There is no change in the focal length when you cut the lens horizontally. Okay, so here you are cutting first vertically. So new power will be P by 2. Okay, because the focal length becomes double, right? But when you cut it horizontally, there is no change in the power and there is no change in the focal length. So the net power of this fourth part of the lens is P by 2. And what is the P? It is 4D. So 4 by 2. So the answer will be 2D. That is fourth option. Okay. Now, a body of mass 100 gram is moving in a circular path of radius 2 meter on a vertical plane as shown in figure. The velocity of the body at point A is 10 meter per second. The ratio of kinetic energies at point B and C is. देखिए यहाँ है हमारे पास पार्टिकल और इस पार्टिकल को हमने 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है. क्या होगा, ये जो पार्टिकल है वो सर्कल में घूमने की ट्राई करेगा बिकॉज इट इज़ अटैच विथ अ स्ट्रिंग ऑफ रेडियस और ऑफ लेंथ 2 मीटर वी कैन से. तो हमें फाइंड करना है कि इस पॉइंट बी और सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो है वो कितना है. सो इट इज़ वेरी इजी, वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सी व्हाट विल हैपन व्हेन द ऑब्जेक्ट विल मूव फ्रॉम ए टू बी. सो लेट अस अज्यूम ए इज आवर रेफरेंस पॉइंट. सो एट ए इट हैज़ ओनली काइनेटिक एनर्जी, और जब ये बी पर जाएगा तो इस पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, बट इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है ही, राइट. तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होकर कुछ पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, राइट. सो ये हमने यहाँ लिखा है. सेम वे वी कैन राइट फॉर पॉइंट सी. अभी क्या करेंगे, अभी जो है इसको हम सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो यहाँ जो है हमें इसका रेशियो निकालना है. तो हम लिखेंगे के बी बाई के सी इज इक्वल्स टू. अभी देखिए ये जो सारी टर्म्स है इसमें m कॉमन है तो ये कट हो जाएगा. तो अभी हम लिख सकेंगे यहाँ वी ए स्क्वायर, राइट. हम लिख सकेंगे यहाँ वी ए स्क्वायर बाई 2 माइनस जी इंटू हाइट एट पॉइंट बी और हाइट ऑफ पॉइंट बी डिवाइड बाई वी ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ मैं, वी ए स्क्वायर बाई 2 माइनस जी इंटू हाइट ऑफ पॉइंट सी.
अभी ए पर जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब 100/2 माइनस जी की वैल्यू 10 लेनी है और पॉइंट बी की हाइट कितनी है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट बी मीन्स इसने इतना हाइट कवर किया, तो हमें पता है कि अगर ये आर है तो ये जो है ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ओके, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो ये आर कॉस थीटा है और हमें ये चाहिए, तो ये पूरा डिस्टेंस तो आर हो जाएगा, राइट। तो ये जो हाइट है, हाइट वो हो जाएगा पूरा आर है, उसमें से ये आर कॉस थीटा माइनस करना है, राइट। तो हाइट ऑफ पॉइंट बी ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस 30, राइट। सो आर कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 30। आर की वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ मैंने लिखा है, ओके, आर की वैल्यू जो है वो 2 है, इंटू 1 माइनस कॉस 30 इज √3/2। इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2 माइनस √3। सो आई कैन राइट हियर g मीन्स 10 और हाइट ऑफ पॉइंट b ये हो जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइड बाई सेम हियर va स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 100/2 माइनस 10। अभी हाइट ऑफ पॉइंट c पॉइंट की हाइट कैसे निकालना है, तो देखिए c पॉइंट यहाँ है, ओके, ये तो यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस ये है, राइट, और ये तो हमें पता है जो r है, राइट। तो जो r है ये 2 मीटर ऑलरेडी दिया है और बस हमें अभी ये निकालना है। तो अगर ये r है तो ये हो जाएगा r cos, अभी यहाँ एंगल कितना बनेगा, 60 बनेगा, तो r cos 60 मीन्स cos 60 इज़ 1/2, सो इट इज़ r/2 और r हमें दिया है 2 मीटर, सो इट इज़ r/2 दैट इज़ 2/2 दैट इज़ 1 मीटर। इट मीन्स ये जो है वो 1 मीटर हो जाएगा। उसका मतलब c पॉइंट है, उसकी जो हाइट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल, c पॉइंट की जो हाइट है वो यहाँ से 2 + 1 यानी टोटल 3 मीटर है। तो यहाँ हम लिख सकेंगे, यहाँ वी कैन राइट here height of point C is 3 meter. So now this will become 50 minus, यहाँ 50 minus 10 into 2 minus √3 divide by 50 minus 30। अभी देखिए इसमें से हम 0 कट कर सकते हैं, राइट। 10 को कॉमन निकाल के जो 0 है उसको कट कर सकते हैं, तो दिस वी कैन री राइट एज 5 minus 2 plus √3 डिवाइड बाई 5 minus 3। तो 5 minus 3 जो है वो हो जाएगा 2, सो वी कैन राइट हियर 2, राइट। इसको फिर से हम आगे कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये 5 minus 2, ये वाला पार्ट 5 minus 2 जो है वो हो जाएगा 3, तो हम इसको लिख सकेंगे 3 + √3 डिवाइड बाई 2। सो 3 + √3 डिवाइड बाई 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। A proton is moving undeflected in a region of cross electric and magnetic fields at a constant speed of 2 × 10⁵ meter per second. When the electric field is switched off, the proton moves along a circular path of radius 2 centimeter. The magnitude of electric field is, देखिए एकदम easy question है, what is given here? See, we know that if there is a cross field, it means देखिए अगर ये जो स्क्रीन है, राइट, इसके अंदर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है और हमने यहाँ से कोई प्रोटॉन को फायर किया तो क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, राइट। ये हमें पता है, चैप्टर 4 से हमने ये पढ़ा हुआ है, ओके। सो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा और इसका जो रेडियस है ये यहाँ दिया है r = 2 सेंटीमीटर और हमें पता है r = होता है mv/qb, बट ये लास्ट वाली कंडीशन है। पहले क्या दिया है, इन द इनिशियल केस इट इज गिवन दैट द प्रोटोन मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब है प्रोटोन स्ट्रेट जाएगा। अब प्रोटोन कब स्ट्रेट जाएगा, जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है, यहाँ मुझे कैसे पता इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की तरफ है, तो जैसे ही प्रोटोन यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। वो जो फोर्स है वो हो जाएगा QVB, राइट। हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स या लोरेंट्ज फोर्स होता है QVB, राइट, साइन थीटा। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और वो हो जाएगा Q × E। अगर ये प्रोटोन स्ट्रेट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो फोर्स है वो इक्वल लगते हैं। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो गया तो प्रोटोन ऊपर की तरफ जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है तो प्रोटोन नीचे की तरफ जाएगा, और दोनों इक्वल है तो वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट मूव करेगा। और बाद में बताया है कि वी स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे स्विच ऑफ हो गया तो जो प्रोटोन है वो ऐसे ऊपर की तरफ, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। तो हमारे पास ये भी है कि QVB = QE, क्यों, क्योंकि प्रोटोन जो है वो इनिशियली स्ट्रेट जा रहा है, राइट, द प्रोटोन इज मूविंग स्ट्रेट। सो यहाँ Q and Q will get cancel, so we can write here V = E/B, और simply we can also write B, अगर B को सब्जेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा E/V। ये हमने क्यों किया वो पता चल जाएगा। ये जो रेडियस है वो हमें ऑलरेडी दिया गया है और उसकी इक्वेशन है mv/qb। सो ये जो इक्वेशन है r = mv/qb,
इसमें हम b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू एम वी एज इट इज़, q एज इट इज़, और b की जगह हमें लिखना है e बाई वी, तो v ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया एम वी स्क्वायर बाई क्यू ई। अभी क्या करना है, अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें से हम क्या करेंगे, E को सब्जेक्ट कर देंगे। तो अगर E को सब्जेक्ट करते हैं तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू आर। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया है 1.6 10⁻⁻27। V की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दी गई है 2 × 10⁵ स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर। अभी जो प्रोटॉन है उसका चार्ज है 1.6 10⁻⁹ और नीचे है आर, आर मतलब उसका जो रेडियस, तो रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, सो 2 × 10⁻² मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सो यहाँ अगर इसको हम कंपेयर करें इस वाले से, सो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2। Two long parallel wires X and Y separated by a distance 6 cm carry currents 5 ampere and 4 ampere respectively in opposite directions as shown in figure. Magnitude of resultant magnetic field at point P at a distance 4 cm from Y. तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट P दिया गया है जो है 4 सेंटीमीटर, कहाँ से, वायर Y से। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है x × 10⁻⁵ टेस्ला और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो उससे डिस्टेंस r पर या फिर उससे डिस्टेंस x पर या फिर डिस्टेंस a पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इक्वेशन b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a, वेयर a इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। दूसरी बात, अगर वायर में करंट ऊपर की तरफ है और पॉइंट यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप अपना थंब है वो राइट हैंड का थंब है वो वायर की डायरेक्शन में रखिए और अपने फिंगर के जो कर्ल्स है या फिर फिंगर को कर्ल करिए, तो ये जो फिंगर्स है राइट हैंड के वो अंदर की तरफ बताएंगे। इसका मतलब अगर करंट ऊपर की तरफ है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ बनेगा, और करंट नीचे की तरफ है तो इस पॉइंट पर यानी राइट हैंड साइड के पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है x का वो इस पॉइंट P पर है वो अंदर की तरफ बनेगा, और ये जो वायर y है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। इसका मतलब ये है by और ये है bx। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हो जाएगा by माइनस bx। क्यों ऐसे लिखा मैंने, वी एज्यूम दैट जो बाहर की तरफ है वो पॉजिटिव है और अंदर की तरफ है नेगेटिव है, राइट। सो दैट्स वाई by माइनस bx। अभी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन मैंने क्या बताई आपको, म्यू नॉट करंट इन y वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 2 पाई, और लेट अस कॉल दैट डिस्टेंस y, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, माइनस म्यू नॉट करंट इन वायर x डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू x, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वायर x। तो यहाँ से जो कॉमन है वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई, y जो वायर है उसमें करंट है 4 एम्पियर और उस पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻², माइनस I में जो करंट है वो 5 एम्पियर दिया है और उसका जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं यहाँ से ये डिस्टेंस, ये इतना तो 6 है और प्लस 4 यानी 10 सेंटीमीटर, तो ये जो है वो हो जाएगा 10 × 10⁻², राइट। अभी पता है म्यू नॉट होता है 4 पाई × 10⁻7 डिवाइड बाई 2 पाई, 4 and 4 कैंसिल, इधर हो जाएगा 100 माइनस यहाँ हो जाएगा 5 2 जा, सो ये हो जाएगा 1/2 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 यहाँ। सो वी कैन राइट हियर पाई एंड पाई कैंसिल, हियर 2 2 जा, सो 2 × 10⁻7, हियर 100 माइनस 50 इज 50, सो हियर 52 जा 100 × 10⁻7, so this can be written as 1 × 10⁻5. So the value of x is 1, right? If you compare with this term, then the value of x is equals to 1. A parallel plate capacitor of area 16 cm square and separation between the plate is 10 cm. So let us assume हमारे पास, right, कुछ ऐसा जो है कुछ कैपेसिटर की प्लेट्स है. So let us assume these are the plates of capacitor. You can assume either square plates or you can assume rectangular plates, right? And separation जो है दोनों के बीच का वो 10 cm दिया है. And let us assume a hypothetical DC current passing. Actually capacitor blocks DC, right? But let us assume the DC current is passing through the capacitor. So consider a hypothetical plane surface area
सो यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ इतना जो है कुछ सरफेस एरिया एज्यूम कर लेंगे इन दोनों के बीच का इनसाइड द कैपेसिटर, मीन्स यहाँ कुछ एरिया जो है वो ले लेंगे। जो एरिया यहाँ दिया है वो है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इनसाइड द कैपेसिटर। एट अ इंस्टेंट द करंट थ्रू द सर्किट इज 6 एम्पियर, सो करंट हमें दिया है 6 एम्पियर। एट द सेम टाइम द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू ए नॉट इज, तो ये जो पूरा कैपेसिटर है, कंप्लीट कैपेसिटर, इस कंप्लीट कैपेसिटर में जो टोटल करंट है वो 6 एम्पियर है, और हमें पूछा गया है कि ये जो स्मॉल एरिया है इस एरिया में से कितना करंट जाता है। तो हम इस कैपेसिटर को एक वायर की तरह एज्यूम कर सकते हैं जिसमें जो करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब कि पूरे वायर की जो करंट डेंसिटी है, लेट अस एज्यूम पूरे वायर की जो करंट डेंसिटी है वो है J1, और वो है हमारे पास I/A, राइट। और इस पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी है, ये एरिया पर जो करंट डेंसिटी है वो है J2, जो हम लिखेंगे I'/A', but current density will remain same, so J1 equals to J2. This can be rewritten as I dash, right? इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो I dash by A dash is equals to I by A. So I dash is equals to I into A dash by A. तो I जो है हमें 6 एम्पियर दिया है, A dash है मीन्स ये वाला A नोट वाला जो एरिया है वो है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो टोटल एरिया है वो हमें दिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ, राइट, पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये जो है ये हो जाएगा 32, हियर हमारे पास 16 है इंटू 10, सो ये 16 2 जा, ओके। फिर ये 6 इंटू 2 यानी हो जाएगा 12 और डिवाइड बाई 10, सो ये हो गया 1.2 एम्पियर, और हमें जो आंसर है वो मिली एम्पियर में देना है। तो 1.2 एम्पियर कैन बी रिटन एज 1200 मिली एम्पियर। आप चेक कर सकते हैं 1200 इंटू 10⁻⁻3, राइट, इसको आप लिख सकते हैं 1.2, ओके। सो द आंसर इज 1200, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 1200 मिली एम्पियर। द नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें इस पार्ट पर एक कैपेसिटर दिया है ये नेटवर्क में, और हमें पता है कि जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, राइट, मीन्स स्टेडी स्टेट आ जाता है, उसी केस में वो डीसी को ब्लॉक करता है। उसका मतलब यहाँ से आगे कोई करंट नहीं जाएगा। अगर करंट नहीं जाएगा इसका मतलब है यहाँ भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर यहाँ भी करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ से पूरी सर्किट कट हो जाएगी, राइट। तो अगर यहाँ से करंट आगे नहीं बढ़ा तो हम ये जो मैंने ब्लू वाला किया हुआ है वो सर्किट के पार्ट को हम ओमिट कर सकते हैं, राइट। तो वो सर्किट का पार्ट नहीं है। तो जो भी करंट यहाँ से आएगा वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से वो यहाँ आगे बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। मीन्स ये सिर्फ इतना जो रेड और वाइट मैंने किया है वही पार्ट जो है वो सर्किट का पार्ट हो गया अभी। तो अभी हम चेक करेंगे कि वो कैसे कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने यहाँ पॉइंट ए लगाया तो इससे आगे गए, यहाँ जो पॉइंट है वो सी है, क्योंकि दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ मैंने जैसे बी लिखा है, यहाँ जब तक कोई रेजिस्टर नहीं आएगा तब तक हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। इसका मतलब यहाँ भी पॉइंट बी, यहाँ भी पॉइंट बी, राइट। तो अभी हमारे पास 3 पॉइंट है जिसके बीच में ये सारे रेजिस्टर्स है। तो यहाँ है हमारे पास ए, फिर यहाँ है बी और यहाँ है सी। तो यहाँ है ए, राइट। अभी बैटरी के बीच में आप देखो एक ए है और बी है, तो यहाँ ए है और बी है, और बीच में कहाँ, यहाँ सी है, तो यहाँ हमारा सी आ गया। तो ये वाला जो रेजिस्टर है वो ए और सी के बीच में है, तो यहाँ है ए और सी के बीच में। फिर ये वाले जो दोनों रेजिस्टर्स है वो है सी और बी के बीच में, ये वाला। तो यहाँ है सी और बी के बीच में हमारे पास 2 रेजिस्टर आ गए। और ये जो 4 है वो ए और बी के बीच में है, तो यहाँ ए और बी के बीच में। तो यहाँ जो 6 और 3 है वो पैरेलल है। अगर आप इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे 6 और 3 का, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, यानी ये हो जाएगा 18 बाई 9 यानी 2। मीन्स इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओहम। सो 2 प्लस 2 यानी ये जो पूरा पार्ट है ये हो जाएगा 4 ओहम, और यहाँ भी 4 है तो इसका इक्विवेलेंट ये रहा, राइट। और ये 4 और 4 है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2, यानी कि ये पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट है ये हो गया 2 ओहम, राइट। और हमें पता है करंट I इज इक्वल्स टू V बाई R, तो वोल्टेज है 2, राइट। सो 2 बाई 2 ये हो जाएगा 1 एम्पियर। A tube of length 1 meter is filled completely with an ideal liquid of mass 2m and closed at both the ends. The tube is rotated uniformly in horizontal plane about one of its end. If the force exerted by the liquid at the other end is F, then angular velocity of the tube is under root F by alpha m in SI unit. What is the value of alpha?
सी दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, इन दैट केस द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय इक्वेशन mv स्क्वायर बाय r and v is equals to omega r, so we can rewrite as m omega square r. So we can assume, right, this tube is made up of large number of small points, right. यहाँ हम infinite number of points निकाल सकते हैं, हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पर लगा हुआ है, राइट. सो हर एक पॉइंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, और इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स आएगा वो हमें फाइंड करना है, राइट. तो हम क्या करेंगे कि कोई एक यहाँ पर जो ये मैंने ऑलरेडी लेबल किया हुआ है, राइट, इस पॉइंट पर हम एक स्मॉल मास एलिमेंट dm ले लेते हैं, और उस dm एलिमेंट पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है दैट वी विल फाइंड आउट. तो हमें पता है कि जो मास डेंसिटी है, राइट, अभी हम इसको क्या करेंगे कि एक वायर की तरह ट्रीट करेंगे, है सिलेंडर बट वी विल ट्रीट एज वायर. सो हम क्या करेंगे, इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो लीनियर डेंसिटी है वो है, लेट अस कॉल दैट लीनियर डेंसिटी एज लैम्बडा. सो वो हो जाएगा मास बाय लेंथ. अभी यहाँ जो टोटल मास है वो 2m है और लेंथ है वो l है. तो ये dm है, उस पार्ट का मास क्या हो जाएगा, तो dm हो जाएगा, dm इज इक्वल्स टू लेम्बडा इंटू dx. dx क्या है, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट की जो थिकनेस है या उसकी लेंथ है, तो उस एलिमेंट में कितना मास है. सो हम लिख सकते हैं लेम्बडा की जगह लिख देंगे 2m बाई l. सो ये हो गया 2m बाई l और यहाँ हो गया dx. तो ये जो dm मास है, यहाँ जो ये पार्ट में dm मास है, वो dm मास है, वहाँ कितना सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें निकालना है पहले. फिर हम क्या करेंगे, जो पूरा सिलेंडर है उसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे. तो यहाँ हम लिख सकते हैं df दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू, हम यही इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मास है वो है dm. ओमेगा तो सबके लिए सेम है, तो यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ उसको हम x ले लेते हैं, हम r भी ले सकते हैं, राइट. अभी हम x लेते हैं, तो ये हो जाएगा x. तो अभी हम क्या करेंगे, हम जो है ये पूरी जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन करेंगे. तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम इस df का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा dm ओमेगा स्क्वायर x. सिर्फ मैं इसको यहाँ रखा हूँ. अभी जो है dm की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dm की जो वैल्यू है वो है 2m बाई l. फिर हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर x, और यहाँ और एक टर्म थी dx. तो अभी हमें इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से, इसकी जो लेंथ है वो हमें 1 मीटर दी है, राइट. तो पहले हम इसको 0 टू l तक इंटीग्रेट करेंगे, राइट. अभी इसको मैंने एकदम इजी बना दिया है, अभी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ जो भी कॉमन है वो टर्म्स को कॉमन निकाल लो. तो 2m ओमेगा स्क्वायर बाई l कॉमन है, और x dx का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2. हमें लिमिट पुट करनी है 0 टू l. तो ये हो जाएगा 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x की जगह हम l लगाते हैं, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ ऑलरेडी एक l है, तो l एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल. तो हमें क्या मिलेगा, f इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू l. अभी हमें क्या करना है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो दी है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें ओमेगा को सब्जेक्ट करेंगे. तो अगर ओमेगा को सब्जेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट एफ, राइट. यहाँ आप ओमेगा को सब्जेक्ट करिए तो ये m और l नीचे जाएगा, तो m बाई l. अभी जो l है, राइट, वो 1 मीटर दिया है यहाँ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ अंडर रूट एफ बाई m. ओके, तो यहाँ m का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसका मतलब जो अल्फ़ा है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 1. तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1.